to 60% of the MCQs are easy, and you are able to attempt them in the first go. 20% of the MCQs are relatively difficult, moderate difficulty जिसको बोलते हैं level, और उसमें वो जो 20% हैं जो moderate difficult हैं उसमें you have to make sure कि आप उसको दोबारा पढ़ें, उसको understand करें और उसका rational जवाब दें. लास्ट 20% ऑफ द एमसीक्यूज आर डिफिकल्ट जो शायद कभी आपने इनकाउंटर ना किया. ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको ये लगे कि लास्ट 20% ऑफ द एमसीक्यूज जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसका आपको समझ नहीं आ रही, आपने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं या देखा नहीं, उनमें यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. फर्स्ट गो में जब आप करते हैं तो 60% एमसीक्यूज आपको पता होता है कि इसका ये आंसर है और आप श्योर भी होते हैं और आप वो अटेम्प्ट कर देते हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ना वो मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के एमसीक्यूज का होता है, क्योंकि उस पे ज्यादातर पास फेल डिपेंडेंट होता है. जब when you are attempting an MCQ, 60% pass percentage is usually 60 to 70%. Variable है, sometimes they keep it 60, sometimes 70. I don't know कि college आजकल cut off value क्या रख रहा है, लेकिन expectedly 60%. अगर 60% cut off value है तो 50 to 60% आपके आंसर्स ठीक होंगे. ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं वो हमेशा ये कंप्लेंट करते हैं कि रिजल्ट आया था और रिजल्ट में हम सिर्फ 3% से फेल थे या 4% से फेल थे. वेल, दैट इज व्हाट द कॉम्प्लिकेशन इज. जो मॉडरेट लेवल के डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं दे आर क्रूशल फॉर यू, बिकॉज उनकी अटेम्प्ट करेंगे अगर आप तो आपके चांसेस पास होने के ज्यादा हैं. जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं जिनका कभी आपने नहीं सुना, जो आपको लगा कि जी अजीब सा सवाल था, इसमें क्लैरिटी नहीं थी, इसमें स्टेम ठीक नहीं थी, इसमें एमसीक्यूज की जो चॉइसेस थी बड़ी वेग थी, इस किस्म के जो वेग या डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, उसको आप बिल्कुल साइड पे रखें. लेकिन अपना फोकस आप फर्स्ट गो में फर्स्ट 50 to 60% जो आपको आते हैं उस पे, और उसके बाद मॉडरेट डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस जिसमें आपको सोचना है, समझना है, सॉल्व करना है, उन पे फोकस ज्यादा रखें तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और obviously extreme difficult are questions which probably only 5 to 20% of the people are able to attempt correctly. So वो परसेंटेज थोड़ी है, लेकिन ऐसे एमसीक्यूज रखे जाते हैं बिकॉज अदरवाइज पेपर बनाने का तो फिर फायदा कोई नहीं रह जाता. ओके, वील स्टार्ट विद क्वेश्चंस. इसमें से कुछ आसान कुछ मुश्किल. लेट्स सी हाउ यू वुड बी एबल टू गेट इट डन, और उसके हिसाब से फिर हम आगे चलते हैं. जिसको भी जवाब आता है वो अगेन कोशिश करे कि बोल दे, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी फेसेस हेयर, सो इट विल बी ओके एंड होपफुली इट वोंट बी अ प्रॉब्लम. ओके, राइट. With barbiturate and benzodiazepine abuse and dependency, sedative intoxication is generally associated with. सॉरी, क्या स्क्रीन नजर नहीं आ रही हमसे. नहीं आ रही? ओके, लेट मी शेयर इट अगेन. मैंने शेयर तो की थी, मैं दोबारा कर देता हूं. अब आ रहे हैं? जी सर, अब आ रही. ओके. With barbiturates and benzodiazepine abuse and dependency, sedative intoxication is generally associated with sedative intoxication, slurred speech, uncoordinated motor movements, impairments in attention and memory, all of the above. Anybody? Sir, all of the above. Okay, wonderful. Let's see. Okay, yes, so D is the right answer, all of the above. Which of the following is derived from the hemp plant, cannabis sativa? Now, this is an easy question. I hope it won't be a problem for you guys. Opium, marijuana, MDMA, or crack? Sir, B. B. marijuana.
A synthetic form of opium was developed by Germany during World War II. This is known as prednisolone, cortisone, methadone, or polyheroin. सिंथेटिक ओपियम क्या है? polyheroin. नहीं, फिर सोचो. Synthetic Sir, opium, methadone. methadone. Yes, sorry. Methadone is the answer. 3 का C है. Okay? So methadone, sorry, मैं गलत बोल गया. Yes, 3 का C है. So ये methadone answer है इसका. और methadone is used now as a treatment of these disorders, but it is dispensed very carefully because it has his own addiction properties. The only good thing is that you can give it in a tablet form and a gauged dosage, जहां पे patient जो है वो comfortable भी रहे. Okay, next question. A motivational syndrome in cannabis users suggests that those who use cannabis regularly are more likely to exhibit apathy, exhibit loss of ambition, have difficulty concentrating, all of the above. Sir, all of the above. Of the above. Apathy होती है ए मोटिवेशनल सिंड्रोम में. लॉस ऑफ एम्बिशन तो होती है. डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन भी चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं कुछ, लेकिन एपैथी होती है. Sir, I think yes. Okay, so it is D, which is all of the above. Okay, lysergic acid diethylamide LSD starts to take effect around 30 to 90 minutes after taking it, and physical effects include LSD के physical effects की बात हो रही. Raised body temperature, increased heart rate and blood pressure, sleeplessness, all of the above. LSD, the physical symptoms, which are those? Raised body temperature, increased heart rate and blood pressure, sleeplessness, all of the above. लगता है LSD नहीं पढ़ा. Lysergic acid diethylamide. It's a different class of drug, which is a synthetic addictive compound, and it is very strong, and its addiction is very complicated. There are multiple associated symptoms with it, and this answer is also all of the above. Raised body temperature is reported with LSD, increased heart rate, blood pressure is raised as well, and sleeplessness is the problem. So person is not able to sleep, he's having hyperthermia, he's sleepless, his heart is racing, his blood pressure is raised, and he is in euphoria as well. Individuals with hallucinogen dependency, उधर LSD की बात हो रही थी, ये hallucinogens की बात हो रही, can spend many hours and even days recovering from the effects of the drug. Some hallucinogens, such as MDMA, are often associated with physical hangover symptoms. Which of the following MDMA are hangovers? 1. Insomnia, fatigue, drowsiness, all of the above. Is LSD a drug which is hallucinogen? Anybody? Yes, sir. Okay, so then both of them are the same. So फिर मजीद symptoms LSD के क्या होंगे? Insomnia, sleeplessness, yes. Fatigue, tiredness, drowsiness. Now, this is different.
क्या आंसर हो सकता है? ये भी सर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। ये भी ऑल ऑफ द अबव है, पक्की बात है। नो सर, इंसोम्निया और ड्राउजीनेस तो अपोजिट चीजें हैं। इंसोम्निया और ड्राउजीनेस ऑपोजिट चीजें हैं। फिर सर इंसोम्निया हो सकता है। एलएसडी से इंसोम्निया होता है, यस, लेकिन फटीग और ड्राउजीनेस होती है। So they are both the same MDMA receptor drugs, hallucinogens, and insomnia is one of the problem. Hangovers कह लें या नींद नहीं आ रही, that is one of the issue with these people. Okay, next question. In aversion therapy, clients are given their drug followed immediately by another drug that causes unpleasant physiological reactions such as nausea and sickness. Rather than physical administering these drugs in order to form an aversive conditioned response, the client to imagine taking their drugs followed by imagining some upsetting or repulsive consequences. The variant on aversion therapy is known as covert sensitization, inverted desensitization, overt desensitization, or covert habituation. Now, this probably is a difficult one. सर कोवर्ट सेंसिटाइजेशन। Q. सर कोवर्ट सेंसिटाइजेशन में a person is sensitized to a stimulus by imagining an aversive, या कुछ भी इमेजिन करता है, या रिवॉर्ड या फिर कोई अनरिवॉर्डिंग स्टिमुलस कोई इमेजिन करता है। And so that is what it is. इसमें हम आमतौर पे क्या देते हैं? सर इसकी एग्जांपल तो मैंने इस तरह पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपनी एफसीपीएस की, तो हम इमेजिन करते हैं अपने आप को डिग्री लेते हुए, तो वो हमारी तैयारी को ज्यादा कर देता है, तो दैट इज कोवर्ट सेंसिटाइजेशन। Sensitization. यस सर। Okay. इसमें जो लफ्ज यूज किया है कि वो जब कोवर्ट सेंसिटाइजेशन थे तो आपको डिस्टेस्ट डेवलप हो रहा है, लेकिन ये तो आपको प्लेजेंट फीलिंग्स आ रही हैं जो आप बता रहे हैं। डिग्री लेते हुए देख रहे हैं तो मेहनत बढ़ जाएगी। You are right. The answer is covert sensitization, but उसकी explanations थोड़ी सी करेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Which of the following drugs are used to treat substance use disorder by attaching to endorphin receptor sites in the brain? ये सारों को आता होगा, I'm sure. Naltrexone, Nexolon, buprenorphine. Endorphin receptor sites of the brain are occupied by which drug? Naltrexone, Naloxone, buprenorphine. Anybody? ये तो इतना मुश्किल नहीं है, is it? नैल्ट्रेक्सॉन किस लिए इस्तेमाल होता है? Anybody? और नॉक्सोलॉन किस लिए इस्तेमाल, नेलोक्सोन किस लिए इस्तेमाल होता है? ओपियोइड एंटागोनिज्म करने के लिए। राइट, सो ओपियोइड एंटागोनिज्म अगर हो रहा है तो एंडोर्फिन रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्रेन में कौन सी चीज यूज कर रही है? ओपियम्स क्या करती हैं? एंडोर्फिन रिसेप्टर्स को क्या करती हैं? बुप्रेनॉर्फिन क्या करती है? पेन सेंसिटाइजेशन पार्शल को, है, हाँ, पेन पार्शल सेंसिटिव चीजें खत्म करते हैं। हाँ, पार्शियल क्या, बिल्कुल। तो ये तीनों दवाइयां एंडोर्फिन रिसेप्टर साइट्स इन द ब्रेन को ये अफेक्ट करती हैं, राइट? ओके, some good, some bad, but this is what the answer is. Let's move forward. Okay, stop sharing.
and share again. Okay, window. Let's do, oops. I hope I have done this. Let's see if I have done this. Yes, I have already covered this one. So this is not, they're the same. Okay. I thought that there is another one here. वो मेरा ख्याल है बाद में निकलेगी. Okay. Let's do that afterwards. And first try this one. Can you see my screen? जी सर. Okay. Let's start with more. Which of the following is not a criteria for substance use disorder? ICD-11 or DSM-5? Both the same. Which one is not a criteria? Huh? सर आपने स्क्रीन दूसरी शो कर दिया फोरेंसिक साइकियाट्री वाले एमसीक्यूज की. अच्छा, सॉरी, मैंने वो शो कर दी है, सो मुझे इसको चेंज करना है. ओके, लो जी, इसको शेयर करें. स्टॉप शेयरिंग. इसको अब आए? नहीं, नहीं सर, नहीं. No, अभी sir. भी नहीं आया. Substance use disorder. नहीं सर अभी. Okay, how this is come? This is going to come. Okay, let me check this. Substance use disorder. अब आया? नहीं. सर ये Forensic? लास्ट वाले जो आप पहले कराए थे वही आए. वो आए? एंडोर्फिन रिसेप्टर वाले जी. चल, शाबाश. अच्छा, ये क्यों नहीं आ रहा? Let me see. अब आया कि वो अभी भी नहीं आया? नहीं. Let No, me sir. show them. Close the file, all of them, and then see. अब क्या है? Can you see this one? नहीं सर अभी कोई. Okay, मुझे फिर ये सारी शट डाउन करनी पड़ेगी, फिर निकालता हूँ. Okay, let's close this one as well and close this one as well. Sorry, this is taking time. Technology and a problem. Okay. Okay. Where is it now? Oh, it's not visible. Soft word. Window 4. Oh, so there are multiple windows open, and that's the reason why it's not getting up. Okay. Let's close the windows. Dismiss this as well. Hopefully now there is no window open. Now I will share this. Okay. Okay. नहीं सर अभी भी नहीं आई. Let me check. कोशिश कर रहा हूँ.
Okay. Can you see this now? No, sir. अभी भी नहीं आई? No, कमाल. sir. How can I share this? Okay, stop sharing. This is surprising. Sorry, this is unfortunately not working. कुछ करना पड़ेगा. I don't know what I can do about it, but यहाँ से सर ओपन है. ये अभी फोरेंसिक साइकेट्री के आ रहे हैं एमसीक्यूज. कौन से जो अभी किए थे? नहीं सर, ये न्यू है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी लॉ. हाँ, चलो फिर ये करते हैं. व्हाट इज द अब वो- एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी? बस ठीक है, ये करते हैं. वो छोड़ दो, जी भूल सर. जाओ. Okay, come on. Let's do this one. Now, these may be a little bit difficult MCQs for the forensic psychiatry. Some of them are easier, but I tried कि whatever MCQs were available as a Pakistani law, then I should include them. थोड़ा सा ध्यान से आंसर्स मुश्किल नहीं होंगे, but you have to just catch up the point in them. According to Pakistani law, what is the age of criminal responsibility below which a child is not held criminally responsible? Under 7 years, under 10 years, under 12 years, under 14 years, under 18 years. If a child commits a crime which अंडर 18. under 18. Anybody else? 7 years. 7 years. Anybody else? Under 40. Under 14. वो तो सारे कवर हो गए. 7, 10, 7, 12, 14, 18. No, it's actually 10 years. पाकिस्तानी लॉ में क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के ऊपर नहीं आती अगर वो 10 साल से कम उम्र है. 10 साल से ऊपर है तो उसको वो चार्ज करके उस पे कोर्ट में केस चल सकता है. ये और बात है कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस में फिर वो जुवेनाइल कोर्ट्स में जाते हैं और वहां पे आगे फर्दर चलता है. लेकिन 10 साल से कम उम्र का बच्चा is not criminally responsible for any crimes they commit. This is unfortunate, but इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं. Articles 59 to 65 of the Kanun Shahadat Order, QSO 1984, pertain to which forensic role? Police investigation, expert witnesses, including psychiatrist, judge sentencing, prison management, or assessment. जब साइकियाट्रिस्ट को कोर्ट में बुलाया जाता है तो कानून शहादत के ऑर्डर के तहत कार्रवाई होती है. इनमें से कौन सी चीज आर्टिकल 59 टू 65 से रिलेटेड है? फिर बी होगा क्योंकि शहादत है और यहाँ विटनेस है. हाँ, सो एक्सपर्ट विटनेसेस कानून शहादत के तहत 59 to 65, and the psychiatrist is called in the court as an expert person, witness, and they give their opinion related to the case. So whenever we are called in the court to give our expert opinion, I have been to the court multiple times, right? So कानून शहादत order QSA 1984 के तहत वो मुझे बुलाते हैं as an expert, and then I go and I present my expert opinion there. So always remember, this is कानून शहादत 59 to 65. The 18th constitutional amendment, इसके बारे में सारों ने पढ़ा और सुना, shifted the responsibility of mental health legislation and services to, I don't think so it's a difficult one, the federal government, the provincial government, the private hospital, the international organization, or district level magistrate. Provincial government. Provincial governments, yes. So after
this amendment, 18th amendment, the powers were designated to the provinces. And before that, there was a Pakistan mental health law, जिसको लुनेसी एक्ट भी बोलते थे. उसके बाद ये प्रोविंशियल लेवल पे चला गया. पंजाब ने अपना बनाया, सिंध ने अपना बनाया, केपीके ने अपना बनाया, बलूचिस्तान ने अपना लॉ बनाया, मेंटल हेल्थ लेजिस्लेशन. और उस लॉ के तहत अब सारे प्रोविंसेस अलग-अलग अपना काम करते हैं एज साइकियाट्रिस्ट. Which of the following is a major challenge for forensic psychiatry in Pakistan? पाकिस्तान में forensic psychiatrists exist नहीं करते, right? What are the major challenges? Too many specialists, lack of awareness and cultural misconceptions, excessive funding, no legislation, or no specialist. लैक ऑफ अवेयरनेस सर, बी आएगा इसमें. Lack of awareness and cultural misconceptions. हमारे यहाँ forensic psychiatry को कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करता. मिसकंसेप्शन ये है कि जो साइकियाट्रिस्ट है वही ओपिनियन दे देगा. सो ये कानून शहादत और उसमें जहां तक जिक्र किया है वहां पे स्पेसिफिकली साइकियाट्रिस्ट का जिक्र नहीं आया, एक्सपर्ट्स का जिक्र आया. सो एक जनरल साइकियाट्रिस्ट को ही एक्सपर्ट कंसिडर कर लिया जाता है, even though if he is not a qualified forensic psychiatrist, which is unfortunately a problem. It is because of lack of awareness and cultural misconception. It's not like that we don't have the specialist. We have the capacity of having the specialist, but we don't want it because people don't understand the importance. When assessing defendant's capacity to stand trial, now this is a common question in Pakistan, must be determined if accused can appreciate the nature of the act, understand the court proceedings, assist in their own defense, make a written statement, all of the above. All of the above. Why? सर क्योंकि चारों होते हैं ना, अप्रिशिएट भी करना चाहिए उसको, अपने नेचर ऑफ एक्ट को, और कोर्ट की हाँ प्रोसीडिंग्स को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, हाँ और अपने डिफेंस को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, और फिर उसको बिल्कुल. या तो खुद स्टेटमेंट लिख सके या लिखवा सके, ये भी होना चाहिए उसके लिए. हाँ, ये कैच है, मेक अ रिटन स्टेटमेंट. अब आधे से ज्यादा लोग तो बेचारे पढ़ लिख नहीं सकते. सो अगर या तो वो खुद लिख सकता हो या लिखवा सकता हो, दिस इज द वर्ड विच इज इंपॉर्टेंट. सो ऑल ऑफ द अबव. When a psychiatrist is asked to assess for the capacity to fit to stand trial, the person or the patient, whatever the criminal person is, he should be able to appreciate the nature of the act, अंडरस्टैंड द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कि उसको सजा हो सकती है 14 साल की, 20 साल की, 25 साल की. Assist in their own defense, then he should be able to defend himself. No, this is not what I have done. I have done this because of this reason, and make a written statement. So all of these four things are correct. These are difficult ones, but I am just trying to make sure that you understand this. Under the section 84 of the Pakistan Penal Code, which legal principle forms the primary basis for insanity defense? Durham Rule, McNaughton's Rule, the Ali Model Penal Code, the Irresistible Impulse Test, or PPC Rule, Pakistan Penal Code Rule. Anybody? McNaughton's rule. The McNaughton rule. McNaughton's rule is an internationally accepted rule. ठीक है, और वो ही हर जगह अप्लाई होता है, और पाकिस्तान में भी penal code में McNaughton's rule को ही अप्लाई करते हैं. I won't go into that detail what is McNaughton rule, but you should know this. A forensic psychiatry in Pakistan must often differentiate between genuine illness and malingering during assessment. Article 164 of Qanun-e-Shahadat Order 1984 is particularly relevant here because it allows for 1. Cross-examination of the victim. 2. Use of evidence obtained through modern methods and techniques. C. Mandatory life imprisonment for faking illness. D. Exclusion of all
hearsay evidence here. Hearsay evidence. Nature of punishment. Which one is correct? It's a very difficult one, but still. Pellicis, is psychiatrist able to differentiate between malingering and genuine illness? Yes or no? Yes. Anybody? Yes. Okay. Yes. So psychiatrists should be able to differentiate between actually the patient is whether this patient is malingering or he is having absolute psychiatric illness. That is true. Usually, when the person is doing malingering or having genuine psychiatric illness, what are the techniques? Modern methods or techniques कौन सी हैं? Anybody? कोई दिमाग में ख्याल आ रहा? Nothing. B is the correct answer. B is the correct answer. Use of evidence obtained through modern methods and techniques. The modern methods and techniques in psychiatry कौन सी हैं? हाँ सुफियान, आप बोले थे कुछ. So DNA testing. नहीं यार, हम कहाँ कराते हैं डीएनए टेस्टिंग? हम कॉमनली क्लिनिक्स में क्या इस्तेमाल करते हैं? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कौन से इस्तेमाल होते हैं? साइकाइट्री में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कौन से इस्तेमाल होते हैं? सर आईसीडी और डीएसएम. आईसीडी और डीएसएम. आईसीडी 11 कितने साल पुरानी है? सर 2022 में आई थी आई थिंक. 4 साल हुए. So this is modern or old? मॉडर्न सर. So this is the use of evidence obtained through modern methods and techniques. Mental state examination and diagnostic criteria are used to diagnose the person illness. And if he is not suffering from the illness, if he is malingering, then those diagnostic criteria should be fulfilled. These are the techniques we use, and B is the answer. This is the catch in this MCQ. But yes, this is what the answer is. Relevant answer. ना उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का ताल्लुक है, क्योंकि हमारी बात हो रही है. हम क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते पेशेंट की. यूजुअली वी डोंट डू दैट, राइट? और हम इम्प्रिजनमेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. होती है या नहीं होती वो पुलिस का काम है, जज का काम है, उन्होंने करना है. एक्सक्लूजन ऑफ ऑल hearsay evidence, we are not relying on any evidence for the criminal activity. That is again वो पुलिस का काम है. Nature of punishment, that doesn't make us different. मेरे मरीज को सजाए मौत होती है या 14 साल की सजा होती है, that is not my domain. मेरी डोमेन ये है कि मुझे पेशेंट को असेस करना है, उसको डायग्नोज करना है और उसकी रिपोर्ट बना के भेजनी है कि जी ये मिलिंगरर नहीं है, ये जेन्युइन साइकाइट्रिक इलनेस है. और जेन्युइन साइकाइट्रिक इलनेस में जब हम एविडेंस पेश करते हैं तो हम क्या करते हैं? हिस्ट्री और मेंटल स्टेट एंड डायग्नोसिस. दिस इज व्हाट वी डू. सो दिस इज व्हाट is the correct answer. Sorry, but this was a tricky question. Which specific section of Pakistan Penal Code states that nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is incapable of knowing the nature of the act? Section 302, Section 84, Section 295C, Section 100 और Section 284. जो मैकनॉटन रूल हमने अप्लाई किया और हमने कहा कि ये पेशेंट जो है ना इज नॉट गिल्टी बिकॉज ही सफरिंग फ्रॉम साइकाइट्रिक मॉर्बिडिटी या मिलिंगरिंग कर रहा है, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? Section 84. 84. Good. 84 is the answer. Under the Contract Act 1872 of Pakistan, a contract is considered voidable if a person was of unsound mind at the time of signing. What is the legal definition of a sound mind for the purpose of making a contract? मैं अपनी जायदाद किसी और के नाम लिख देता हूं, बच्चे शोर मचाते हैं कि जी ये बंदा जो है ये तो इस काबिल ही नहीं था कि ये
ये साइन कर सकता है इस डील को, इसमें कौन सी साइकाइट्रिक चीजें हैं और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? Having no history of psychiatric hospitalization, being capable of understanding the contract and forming a rational judgment of its effects, having an IQ score above 90, being free from any form of anxiety or depression, not having any psychiatric morbidity. What is correct? C. Being capable of understanding the contract. Bilkul. Absolutely. Now, this is a very simple question, but you have to just pick up the catch. No history of psychiatric hospitalization doesn't make the person not able to make a judgment call, because remission में कोई भी patient judgment कर सकता है. Then, having an IQ score above 90 is not necessary. People with less IQ of 90 can be able to understand the contract and sign it. Being free from any form of anxiety or depression. Anxiety और depression आपकी cognitive capabilities को compromise नहीं करते unless आपका decision irrational हो जाए extreme state of depressive disorders में. Not having any psychiatric morbidity. People with psychiatric morbidity, even then, they are capable of doing appropriate judgments and sign a contract. उसके लिए cognitive processing ठीक होना जरूरी है, उनकी psychiatric बीमारी जरूरी नहीं है. In Pakistan, if an accused person sanity is questioned during a trial, who has the legal authority to form a standing medical board to assess their mental state? कोर्ट से केस रेफर होकर साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, कौन ये काम कर सकता है? द प्रिजन सुपरिटेंडेंट, द हाई कोर्ट एडवोकेट, द प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट और द कोर्ट, द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और द मेडिकल सुपरिटेंडेंट. प्रोसेस ये होता है कि आप दरखास्त देते हैं, दरखास्त साइन होती है और फिर उसका ट्रायल होता है, उसकी असेसमेंट होती है. ये कौन करता है? This is not difficult, huh? C. Yes, this is C. The Provincial Health Department or the court. So, Secretary Health ये order कर सकता है on seeing the various things. So, Provincial Health Department, they should have, I don't know they have it or not, but they should have, ideally according to the law, a place where these cases can be referred for the assessment purposes. Now, next question regarding testamentary capacity, the ability to make a valid will. मैंने अपनी will लिखनी है और testamentary capacity बोलते हैं इसको. In Pakistan, the golden rule for a psychiatrist or a doctor witnessing the will of an elderly or ill person is to, 1, ensure the person is physically strong enough to write, examine the person and record that they are sound mind, memory, and understanding, confirm that the person has no living relatives, make sure that will is written in English, and rule out dementia. C. A? B. B, sir. B. Yes, B is correct. Examine the person and record that they are sound mind. So, ऊपर जो हमने बात की थी वो मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, तीनों चीजें. सिर्फ डिमेंशिया को रूल आउट कर देने से मसला हल नहीं होगा. Under the Dissolution of Muslim Marriages Act 1939, a wife may seek a divorce khula if their husband has been insane for a continuous periods of at least 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल. मेरे पास पेशेंट आता है, उसकी बेगम कहती है कि मैंने इससे तलाक लेनी है, खुला लेनी है क्योंकि ये मेंटली इल है. कितने साल की कंटिन्यूस इलनेस हो तो मैं कहूंगा जी आप जा सकते हैं और खुला ले सकते हैं पाकिस्तानी एक्ट के तहत. एनीबडी? कोई वाइल्ड गैस ही लगा दो. 2 years. एब्सोल्युटली राइट. 2 साल. 2 साल अगर कंटिन्यूस इलनेस हो, ये 2 साल का टाइम पीरियड आई डोंट नो किस रैशनल में निकाला गया है लॉ के हिसाब से, लेकिन वो उसमें ज्यादा रैशनल यही है कि 2 साल की अगर कंटिन्यूस इलनेस हो
जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है तो वाइफ डिवोर्स या खुला ले सकती है. When a psychiatrist is called as an expert witness in a Pakistani court, वो कानून शहादत के तहत, their testimony is considered advisory rather than binding. This means the judge must follow the psychiatrist's opinion exactly. The judge can weigh the expert's opinion alongside other evidence to reach to a final decision. The psychiatrist has the power to acquit the prisoner directly. The testimony is only valid if the psychiatrist is a government employee. Judge will have final authority. आमतौर पे आपने क्या सुना? बहुत सारे B. केसेस पे डिस्प्यूट हुआ. बी. बहुत सारे केसेस पे डिस्प्यूट हुआ, साइकाइट्रिस्ट ने ओपिनियन दी कि ये पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का था, फिर भी उसको सजाए मौत जज ने सुना दी. राइट? So the judge can weigh the expert's opinion along other evidence to reach to a final decision. So he is the authority. Psychiatrist is not the final authority. Which term is used in Pakistani law to describe person who is mentally incapable of managing their own property and affairs? Demented, interdicted, person of unsound mind or lunatic, delusional या पागल. C. Good. Under Section 465 of the CRPC, if a court of session or high court finds an accused to be of unsound mind and incapable of making a defense, the trial must be dismissed, continued, postponed, completed within 30 days, retained in hospital. Sir, postponed. Good. C. Postponed until the person becomes fit. उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, और जब वो फिट टू स्टैंड ट्रायल हो जाता है फिर उसका ट्रायल किया जाता है. ठीक है. जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट JJSA 2018 mandates that the investigation into the juvenile's case must be assisted by which specific professional? Forensic pathologist, social welfare officer, prison warden, DNA expert, mental health professional. Mental health professional. Okay. Anybody else? Social welfare officer. Yes. हर साइकाइट्री डिपार्टमेंट में सोशल वेलफेयर ऑफिसर डेजिग्नेटेड होता है, और उसमें से उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि वो जाके सोशल इन्वेस्टिगेशंस के तौर पे सारी डोमेन में जुवेनाइल्स की बैकग्राउंड और हिस्ट्री और वो सारों में साइकाइट्रिस्ट को हेल्प करे. नाउ दिस इज अ कॉमन थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली ये आइडियली स्पीकिंग बाय लॉ ये एग्जिस्ट करता है. सर्विसेज हॉस्पिटल में हमारे पास 2 सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स थे, and they are used for this purposes if they are used appropriately. According to the JJSA 2018, what is the maximum duration of juvenile offender can be kept in solitary confinement in a rehabilitation center if they are high risk to escape? Juvenile है 11 साल से 18 साल की उम्र का बच्चा जिसने क्राइम किया, उसको कितने अरसे तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 7 दिन, नेवर अलाउड लॉन्ग टर्म. Never allowed. नहीं. We can keep the child of 11 to 18 years of age who is committed the crime in solitary confinement in a rehabilitation center or mental health institution for 24 hours for assessment and observation purposes. Which of the forensic principles at the Punjab Forensic Science Agency, PFSA, is responsible for truth verification during criminal investigation? Forensic serology, questioned documents, polygraph examination, trace chemistry, DNA testing. ये जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, ऐसी ही साइंस एजेंसी सिंध में भी है, KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है. नाम मैंने एक लिख दिया.
पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी PFSA, वो क्या करते हैं? साइकाइट्रिस्ट को हेल्प आउट करने के लिए क्या करते हैं? फोरेंसिक सीरोलॉजी, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन, ट्रेस केमिस्ट्री, DNA टेस्टिंग। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, पॉलीग्राफ पॉलीग्राफ पॉलीग्राफ, एग्जामिनेशन। यस। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसीज वालों के पास पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन की फैसिलिटी मौजूद है। अगर आप यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, जब आपको डाउट है ये मेलिंगरिंग है कि नहीं है। सो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चनेबल चीज है। The Bolam test is a common law standard often cited in Pakistani medical negligence cases. It states that a doctor is not negligent if they act in accordance with their own best judgment, a practice accepted as proper by a responsible body of medical professionals, the patient-specific request, the newest experimental research only, fellow psychiatrists are excused. हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की जा रही हैं जो साइंटिफिक बैकग्राउंड्स के बेसिस पे नहीं है। मसलन ऑटिज्म वालों को PRP कर रहे हैं, CRP कर रहे हैं, और फिर इस तरह की और बहुत सारी इंटरवेंशंस हो रही हैं। तो ये किस कैटेगरी में फॉल करती हैं? B, a practice accepted as proper by a responsible body of medical professionals. PMDC अगर अप्रूव कर देती है कि ये ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज ठीक हैं तो उनको आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट मना कर देती है कि ये ठीक नहीं है तो वो बंद हो जाती है। राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे दे दें, किस पे करना है? अगर तो फायदा हो तो बताना, ना फायदा हो तो ना बताना। अगले MCQs किस पे करने? हाँ, एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एक तो एंजाइटी और एक और टॉपिक सर दूसरा डिसऑर्डर को कवर करते हैं। चाइल्ड कौन सा? साइकियाट्री में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, चाइल्ड साइकियाट्री में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया वगैरह जो है। डिसेबिलिटीज, ओके। स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट सैटरडे को 8 बजे ये कवर करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके, सर, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच फॉर कमिंग इन, सी यू। अगर ये मुश्किल लगे MCQs या ये MCQs चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर दें, मैं भिजवा दूंगा। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू। थैंक यू सर।